गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सिग्नल एंड सिस्टम्स की सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है द ट्रिगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ कोसाइन फंक्शन। The CTFT means continuous time Fourier transform of a continuous time signal x of t equal to exponentially minus a mod t, where a is greater than 0 is its Fourier transform is 2a upon a square plus omega square. The number of Fourier coefficient in Fourier series 3. The Fourier transform of unit impulse is del of t का Fourier transform क्या रहेगा 1. The Fourier transform of signum function is given by 2 upon j omega. The Fourier transform of f of t equal to mod t. Mod t का Fourier transform क्या आएगा आपका negative of 2 upon omega square. What is the polar form of the Fourier series? So x of t is equal to c naught plus summation c n cos n omega t plus phi n. The first 5 DFT points of real and even sequence x of n of length 8 or x of k equal to 5, 1, 0, 2, 3. Find the remaining 3 points. तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो आपके पास है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का उसका यूज करके यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है रिमेनिंग 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग 3 पॉइंट्स हैं 2, 0, 1. DFT is calculated for the finite discrete signal. In n-point DFT of L-point sequence, the value of n to avoid aliasing in frequency spectrum is n greater than equal to L. In n-point sequences, if n is equal to 16, the total number of complex addition and multiplication using radix 2 FFT are the 64 and 32. तो यहाँ पर आपको जो DFT के जो फॉर्मूला है DFT एंड FFT का है उसको आप पहले स्टडी करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, देन आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे. If x of n and x of k are an n-point DFT pair, then x of n plus capital N equal to x of n. Is it true or false? Is it true? Okay, क्योंकि यहाँ पर हमने periodic properties use किया. Now next question. The condition for the impulse response to be anti-symmetric is, यहाँ पर जो conditions क्या है कि आपकी h of n equal to minus h capital N minus 1 minus small n. If x of n and capital X of k are an n-point DFT pair, then x of k plus capital N equal to x of k. ये frequency domain में आपकी periodic property. FFT algorithm is designed to perform complex operation. Is it true? Now, which of the following is true for a KV-shape analog filter? So in type 2, the magnitude response is monotonic in pass band and equiripple in stop band. Okay, which of the following is the application of lattice filter? So all of the mentioned means digital speed processing, adaptive filter and electroencephalogram. ये सभी के आपके application of the lattice filters. What is the output of the single stage lattice filter if x of n is the input? So x of n plus k x of n minus 1. ये आपका सिंगल स्टेज लैटिस फिल्टर का आउटपुट है. The direct form 1 and direct form 2 structure of IIR system will be identical in all pole zero system and all zero system. तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका both A and B. Number of multiple and adder required for the direct form realization of nth order FIR system or n and n minus 1. तो मल्टीप्लायर यहाँ पर कितने रिक्वायर्ड है? कैपिटल N and adders आपके रिक्वायर्ड है n minus 1. Which of the following defines the rectangular window function of length m minus 1? तो यहाँ पर जो window functions का है W of n is equal to 1 when n equal to 0, 1, 2 m minus 1 and is it 0 elsewhere? The multiplication of the window function Wn
W of n and H of n is equivalent to the multiplication of H of W and W of W. Is it true? Yes. The Fourier transform of autocorrelation sequence gives the power spectrum. The Blackman-Turkey method of power spectrum estimation is also known as a periodogram smoothing. The architecture that employs instruction level parallelism is VLIW architecture. The pipelining refers to the executing different phases of two or more instructions in parallel. Next question. In the frequency sampling method for FIR filter design, we specify the desired frequency responses HD of omega at a set of equally spaced frequencies true. To reduce side loops, in which region of the filter the frequency specification has to be optimized transition band. The major advantage of designing linear phase filter, FIR filter using frequency sampling method lies in the efficient frequency sampling structure is true. If x1 of n and x2 of n are two real valued sequences of length n and let x of n be a complex valued sequence defined as x of n equal to x1 of n plus jx2 of n for 0 less than equal to n less than equal to n minus 1, then what is the value of x2 of n? So value of x2 of n is x of n minus x conjugation of n upon 2j. Now, next question. The effect of round off errors due to the multiplication performed in the okay. So the effect of round off error due to the multiplication performed in the DFT with fixed point arithmetic is known as the quantization error. True. How many quantization errors are present in one complex valued multiplication? 4. Which of the following is true in the case of Butterworth filter? All of the mentioned. Smooth pass band, wide transition band, not so smooth stop band. Next question. What is the value of magnitude frequency response of Butterworth low pass filter है? Sigma is equal to 0 पर यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1. Where does the pole of the transfer function of normalized low pass Butterworth filter exist on unit circle? If f, m and n are the order of numerator and denominator of rational system function respectively, then how many multiplications are required in direct form one realization of that IR filter? तो यहाँ पर आंसर रहेगा m plus n plus 1. ओके, तो यहाँ पर सिग्नल सिस्टम के साथ में हमने DSP के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे. अभी सिस्टम्स का हमें कॉन्सेप्चुअल नोट्स प्रोवाइड करने रहेंगे. DFT के भी DSP जो सब्जेक्ट से जो रहता है वो सिग्नल सिस्टम का ही पार्ट है, उसका भी हम कॉन्सेप्चुअल नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे. प्लस और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम लेकर आएंगे आपके सामने. तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल को. कहीं पर भी कोई डाउट है अगर आप तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. और अगर आपको इसके डीप में स्टडी करना है, कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. हम आपके लिए सेपरेट एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, आपके लिए लेक्चर एक प्रोवाइड करेंगे और लाइव क्लासेस में भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. थैंक यू.